गणपति बप्पा ऊर्जा होनी चाहिए। गणपति बप्पा गणपति बप्पा। बेहद प्यारे कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश हम कर रहे हैं। तिलक फाउंडेशन द्वारा एजुकेशन फेस्ट का आयोजन किया गया है रायपुर में। 10वीं और 12वीं के बच्चे कैसे अपना भविष्य और कौन से सब्जेक्ट में अपना भविष्य निर्धारित कर सकें, उसके बारे में जानकारी देने के लिए एंटरप्रेन्योर और काफ़ी सारे कॉलेज के सीनियर आए हुए हैं, जो बताएंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट में लेके अपना करियर बना सकते हैं। आगे हम बच्चों से जानेंगे कि उनका क्या प्लान है और किस तरह से वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं अपने करियर को लेके। Having said that, I would keep my speech short. मैं कम बोलूँगा और प्रेफर करूँगा कि आप लोगों से एक अच्छा सा Q&A हो। As I already been introduced, उसको repeat नहीं करेंगे, and I will straight away jump to the topic of today. तो when I was talking to the organizers of the event, they said कि सर हमारा काम है कि हमारा काम है स्टूडेंट्स को जो स्पेशली स्कूल से पास आउट हो रहे हैं, schools and government colleges, we want to guide them to the dynamic landscape of education and career choices. And somehow this phrase is very apt. It's very all-encompassing because it tells you a couple of things. First, that there is this, instrumental relationship between education and career choices, right? We all know that yes, education is first and foremost priority to give us moral values, but it also has to give us job, economic security, and such. But this relationship, this instrumental relationship operates in a dynamic landscape. मतलब क्या है कि ना तो दोनों चीजें बदल गई एक साथ. The nature of jobs are changing, as well as the content of education and the medium through which it's being imparted, online, offline, distance learning, etc. ये सब एक साथ change हो रहे हैं. And it's very rare that these changes are in sync. I would say they are not in sync. I'll give one example of computer education. Now, it took a while, a few decades if I may say so, for computer education to become mainstream in our country, in CBSE and ICSE schools. स्टेट बोर्ड्स की कम भी उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, बट अब क्या हो गया है? नाउ अ रिवोल्यूशनरी ऐप हैज कम, अ टेक्नोलॉजी. आप लोगों ने अभी हाल ही में मतलब प्रोग्रामिंग सीखी, कोडिंग सीखी, लर्न C++, but then something has come up which has made lot of change in our lives. हम कुछ भी होता है, राइट अप लिखना है, कुछ गूगल करना है, तो we ask this app. Any guess? ChatGPT, right? So a prediction is that because of this AI technologies, तो सिर्फ एक तो है नहीं, कई सारी कंपनीज लगातार इस पे काम कर रही है. So the prediction is that cognitive but repetitive work in near future will almost vanish. What would stay are those which are cognitive but of a higher order and creative in nature. So मैं यहाँ पे आपको डराना नहीं चाहता कि आप लोगों ने जो कंप्यूटर की क्लास में जो पढ़ा वो सारा वेस्ट हो गया. नहीं, वो वेस्ट नहीं हुआ है. It is a platform. What you are supposed to do, and as recently I was interacting with the principal of a very esteemed school, he told me, sir, I tell my students that you should educate yourself to keep educating yourself. मतलब क्या है इसका कि आपने कुछ सीखा, वहाँ रुकना नहीं है, उसे आगे बढ़ना है, तो स्किल को अपग्रेड करते जाना. So that is one part of making a career choice. Talking about that instrumental relationship between education and career choice. Understand that going forward, that will not always provide you jobs. You always have to upskill, learn new areas, and if you have to switch jobs, please do switch jobs. ये हमारी सोसाइटी में टैबू है कि कैसे मतलब आप जॉब स्विच करेंगे और दैट, but it's very common. Another thing, in fact, on the same line,
You must have heard Yuval Noah Harari, the author of *Sapiens*. He said this is the first time in human history where absolutely no one has any idea what education should be imparted in schools. Because technology आ गई है most of the cognitive skills के लिए, है ना? कितना creative skills पे कितना ध्यान देंगे? Those are challenges and it's a must undertake. So first thing is continuous upskilling, and second is your interest. Like you have to have interest. How can you perform creative tasks if you don't have interest? You have to have interest, right? और इंटरेस्ट किस काम में आएगा? जिस काम को लेकर आप पैशनेट हैं, जो आपकी हॉबी है ना? How many have seen the movie Oppenheimer? Quite few of you, right? Now in that movie, the protagonist Robert J. Oppenheimer, I'm assuming he's the protagonist of the movie. He visualizes things, right? He visualizes the new quantum physics concepts, right? Now, I'm not saying you have to be that good to do well in physics. What I'm trying to say is that, in a way, they were trying to show that he loved his job. No? He felt good in that working environment. So, that is how you should feel about the education or the career path you take. अच्छा, ये एक example हो. अगर while watching the same movie, you were more interested in the continuously changing geopolitics. Like while they are developing the bomb, the geopolitics of the World War II was changing, right? So first the enemy was some other country, then the enemy became some other country, but all the time उनका निशाना किसी तीसरे के ऊपर था. So if that part interests you, that means you are more for humanities, for social sciences, for technology, politics, history. And mind you, those require very rational, critical thinking, not very things that are traditionally taught in our schools. And there is third part. What if while watching the movie you are more concerned about the screenplay, the writing, the camera angles, the shutter speed, those things? आपका ज़्यादा interest इसमें है कि dialogue ऐसे क्यों लिखा हुआ है? That means you are more into filmmaking, you are more into creative things. और ऐसा है तो there might be a Christopher Nolan sitting in front of us, we don't know. And ultimately चीजों को इतना compartmentalize अगर आप नहीं भी करना चाहें तो nowadays we are going for interdisciplinary education. वो क्या रहा है कि अगर 11th 12th में आप में से कई लोगों ने मैथ्स लिया है लेकिन साइंस में इंग्लिश लिटरेचर भी है, साइड में पॉलिटिकल साइंस है. Many of the schools have started providing these combined courses, and not only schools, even IITs, they are giving BSc in maths and some social science subject also. So the second part is about interest. You should be really keen on what you do. And अब इसमें जब भी हम हॉबी और पैशन की बात करते हैं, और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इवन टिल टुडे दे स्टार्ट थिंकिंग क्या है मेरे को, राइट? इतना कुछ हॉबी पे फोकस होता नहीं है, इतना कुछ पैशन के बारे में सोचते नहीं है. She laughed, right? You know what I'm talking about. It's very common. No need to be harassed. ये क्या हो गया? अपनी जो कोई हॉबी डेवलप नहीं की, फ्यूचर इंतजार है, नहीं ऐसा कुछ नहीं. You can get good at something. And lastly, I'll apply this thing कि अगर आपको लगता है कि यार मैं although I'm not into corporates, I'm not into any particular niche area, I'm just a humble human being with decent intelligence and absolute impeccable integrity, then may I suggest public service to you guys? Now you all have heard about UPSC Civil Service Examination and one of its products. Although public service is much more than civil service, there are other services. Classification में बात करने के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास. But there are NGOs, there are corporates and private sectors that work with government. So ये सारे areas भी हैं. And एक बड़ा common question आता है public service के बारे में. Sir, of course some of you would certainly ask it in Q&A. So my answer is no. Delhi quota जाना necessary नहीं है. Gone are the days. Gone are the days. Technology has brought institutions, reading material, mentorship, everything to your doorstep. Everything. बस हाँ guidance ठीक होनी चाहिए. Mentorship authentic हो, reading material हो, online offline अच्छा हो, पढ़ने का environment हो. So I'll have to summarize what I have said.
continuously upskill. Second, do what interests you. And if you think that मजा नहीं आ रहा, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत आने वाले समय में coming future will be very common to see students that people work across different areas. I mean, public service भी वही है ना. A lot of my batches are ITs, some with engineering, some were lawyers, some were doctors. So we do have examples of switching careers, right? So, and last but not the least, जो भी career choice रखो, you must control your frenemy. This is your friend, this is your enemy. It's your frenemy, right? Especially growing up kids, boys and girls, इसका use तो करना पड़ेगा. We are not as easy as someone who say कि यार मैं तो फोन नहीं रखता. तो जो फोन नहीं रखता उसके 3 असिस्टेंट भी होते हैं. उसके भी आपको फोन उठाने के लिए उठाने के लिए. So that's hubris, I would say. You will need phone. Study के टाइम पे भी फोन का काम पड़ेगा. पर कैसे यूज करना है? अगर कोई कॉन्सेप्ट को गूगल किया, उसका ये मतलब नहीं कि गूगल की साइट में विंडो इंस्टाग्राम पे खुल गया, एक साइट में यूट्यूब खुल गया और कहीं से कहीं चले गए. So you have to protect yourself from that. Okay. So with this, I would like to conclude. I hope at least some of you have some good questions for me and a clarification. ये स्क्रिप्ट चैट एक्टिविटी से नहीं लिखा है, चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो उसमें you have 2 papers. One paper is entirely based on the mathematics which is taught in 11th-12th science. उसके बिना नहीं निकलेगा वो एग्जाम. तो मेरा पर्पस वो था साइंस लेने का. Never into engineering. You have not completed engineering, right? No, did not do engineering. Normal BSc. Normal. Yes, yeah. It's slightly different in curriculum than BCA because I'm not sure क्या मतलब exact क्या difference है. But I have seen couple of people we have interacted from a corporate culture. But down the line when you grow up and you interact with your professors, your peers, and you interact with people in public service and corporates, वो पता चलने लगता है कि ये मेरे लिए है क्या. So that answer will come later to you. Thank you, sir. Good afternoon, sir. My name is Piyul Tiwari and I have just given my 12th boards. My question to you is that you just said that we should follow our passion, but one thing that we keep in mind is that we want financial stability, we want independence, and it is very important in today's age. So my question is, how do we ensure financial stability while following our passion? Because sometimes following our passion doesn't ensure it. तो वही ना, आपका पैशन क्या है उसे मैटर करता है. अब मेरा पैशन है संडे 4 घंटे सोना दोपहर में, तो that would not earn me anything. By passion I mean if you are creative about few things. जैसे कि a lot of kids, what I have also show a remarkable tendency to be a good painter or be a good photographer, good sketch artist. उसको आगे pursue नहीं करते हैं once the board exams come on the horizon. So I meant in that sense. Right? You balance your career and you balance those hobbies also. Right? But yes, you can't have the privilege of following your passion for the sake of it. वो जो कहीं आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे कि they are wandering around the world and somehow they have managed to figure out the finances of it. I am jealous of them how they have done it. But उस टाइप का पैशन तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा. It should be a productive thing. मतलब आप पैशनेट हैं किस चीज़ को लेके. अब if you are for example you are good at singing, right? तो अब पहले के ज़माने में क्या था कि unless you are mainstream singer or you are mainstream artist तभी तो कोई स्कोप है, चाहे क्रिकेट हो कोई अदर फील्ड हो. But now so many avenues have opened up that you can keep it a side gig at least for some time until you feel fully confident कि हाँ अब ये मेरा main career हो सकता है. I hope I have answered your question, although not sure. Have I? Okay. Okay. So I think. Good afternoon, sir. This is Singh, and recently मैंने अभी 12th पास किया. I'm a commerce student. So मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं बहुत क्रिएटिव माइंड की हूँ थोड़ी, तो मेरे को सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, थोड़ा डांसिंग में भी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ओर अपना करियर बनाना चाहिए. लेकिन जब मैं अपनी हॉबीज़ को लेकर के चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को ना ये सारी पर्टिकुलर चीज़ों में फोकस करना चाहिए एक बार. तो
मैं ऐसा कैसे करूँ कि मैं अपना जो मेन फोकस है किसी एक तरफ रख पाऊँ? किसी एक तरफ रखना क्यों है? मैंने कहा जैसे कि मेरी हॉबीज़ वगैरह जो है सिंगिंग वगैरह, तो कभी कभार उनको करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड पे अपना करियर बना लेना चाहिए, और कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, मुझे अपना करियर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की गवर्नमेंट जॉब की ओर बनाना चाहिए। तो मेरा मेन फोकस एक जगह नहीं बैठ पाता सर। So it's essentially a safety versus passion debate, right? Yes sir. Whether you want a safety net or a passion net. Yes sir. But don't you think wanting to crack civil service is also a very passion driven thing? मतलब उसको आप एज अ सेफ्टी नेट देख सकते हैं क्या कि कुछ नहीं हुआ तो ये तो कर ही लेंगे, वो भी पैशन ही है एक्चुअली। वो सारी चीज़ें सिंगिंग, डांसिंग एंड ट्राइंग टू बिकम पब्लिक सर्वेंट सेम कैटेगरी में आती हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट एट योर स्टेज, आई वुड हैव डन इट इफ आई वर एट यू। अभी आपने 12th किया है, that means there are still few good years before you have to seriously think about whether you want to prepare for any competitive examination. Till then, become really good at those two art you have mentioned. अब आप उस हिसाब से अपना ग्रेजुएशन का फील्ड चुनिए, where you want to study, you want to be studying from home, you want to go to some other college, or you want to join a place which imparts education in singing and dancing, जो अदर सिटीज़ में जैसे कि जैसे कुछ ड्रामा स्कूल्स होते हैं, आर्ट के स्कूल्स होते हैं। सो यू कैन डू दैट टिल देन। जब वो पॉइंट आ जाएगा, यस नाउ वन ऑफ द टू थिंग्स, उसमें भी इट्स अ फॉली की जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आप कुछ और नहीं कर सकते। नो, दैट्स नॉट ट्रू। मे बी फॉर फर्स्ट 1.5 year, लाइक यू हैव टू बी रियली ड्रिवन। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं। Other except that period, you can pursue other things साथ में। लोग जॉब करते हुए एग्जाम देते हैं, लोग ऑलरेडी किसी जॉब मतलब कोई फील्ड में होते हैं उसके साथ एग्जाम देते हैं, वो कैसे टाइम निकालते हैं? इवेंचुअली ये टाइम मैनेजमेंट है, ये मतलब 1-0 का बाइनरी के कंस्टेंस में मत देखिए। अभी जो आपके पास 3 साल टाइम है उसको यूज़ कीजिए। व्हेन यू ग्रेजुएट, टेक अ हार्ड लुक, एंड इवन देन आपको कम्प्लीटली झोंक दिया अपने आप को जो कहते हैं, ऐसा आपको 1.5 से 2 साल ही चाहिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यू कैन जगल द टू थिंग्स, ठीक है? यू रियली कैन, मतलब ऐसा नहीं सिंगल माइंडेड होने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये या वो, यू रियली कैन, ट्रस्ट मी। So I wanted to know that if I want to make my career in the imagination side, where I can use my imagination, write and create stuff. So what are the other options which is not including cinema? Like I don't want to go into cinema, but at the same time I want to use my imagination. Except cinema, other creative fields like she has mentioned, right? And there is animation also. There is a vast computer science of animation, right? वो भी काफ़ी जो ग्राफिक नॉवेल्स लिखते हैं वो दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। आज के टाइम में तो वो क्या है, वो कोरियन चीज़ें क्या चलती हैं, नहीं वो ब्रांड नहीं, देयर इज अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कॉमिक्स व्हिच इज कोरियन, हाँ वैसा ही कुछ। सो यू कैन गो इन दोज एरियाज आल्सो। एंड देखो, एज आई सेड मेंशन, व्हिचएवर क्वेश्चन यू हैव, इंटरनेट हैज आंसर फॉर एवरीथिंग। यू कैन लिटरली गो ऑन रेडिट एंड verbatim ये सेंटेंस लिखोगे, इट विल गिव यू मतलब डजन्स ऑफ आंसर्स कि आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। दैट्स व्हाई आई सेड कि यूज दिस स्किलफुली, इट कैन गाइड यू, इट कैन डिस्ट्रॉय यू। बट यस, देयर आर एरियाज जैसे कि इन्होंने बताया, और ये ग्राफिक नॉवेल्स हैं, इस तरह की चीज़ें, यू कैन डू दैट। Sir, but I want my creative side to include writing specifically. अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।